All right, guys. Hello and welcome everyone to this training session. And just let me know in the chat section if you can hear me clearly. अगर मेरा ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में बता दो on YouTube as well and on Zoom also. All right, perfect. Thank you. Okay, thank you so much for the confirmation. I hope the connection is good. सभी को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है. Perfect. ठीक है. Voice is absolutely clear. Thank you so much, Surya. Thank you so much. Everyone else, good evening, bhai. Good evening, good evening, good evening. बढ़िया. Sorted. Learn with Chenna. Hello. Hi. Hello. सभी को हेलो जो Zoom पर हैं, सभी को हेलो जो YouTube पर हैं. फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं YouTube नहीं सॉरी मेटा एड्स के बारे में. यूट्यूब एड्स के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे हम आज बात करेंगे मेटा एड्स के बारे में. हाउ कैन मेटा एड्स हेल्प यू इन जनरेटिंग लीड्स. तो चाहे आप फेसबुक एड बोलो, चाहे मेटा एड्स बोलो, चाहे इंस्टाग्राम एड्स बोलो, सारी चीजें एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है. इंस्टाग्राम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेटा ओनली, जो पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था. तो सब चीजें सेम ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. फटाफट से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. माई आईपैड इज रेडी. तो आपको जो भी क्वेश्चन हो मेटा एड से रिलेटेड उनको भी नोट डाउन कर लेना, बिकॉज सेशन के एंड में वी विल डू अ क्यू एंड ए सेशन, एंड इन बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस लेता रहूंगा जहां पर हम फेसबुक एड्स के बारे में समझते रहेंगे. तो ऑलराइट, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार, बिकॉज आज मैं काफी सारी चीजें आपको लिख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले मेटा एड्स एक्चुअल में क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं. अच्छा, बिफोर दैट लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, आप में से कौन कौन ऐसा है जो मेटा एड्स ऑलरेडी रन कर रहा है. हाउ मेनी आर ऑलरेडी यूजिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स फॉर लीड जनरेशन और समथिंग लाइक दैट. For any business, if you are doing it for affiliate marketing, that's very good. If for any other business also, that's also fine, because the thing that we are going to discuss today are kind of universal. Because first of all, we will discuss about the fundamentals, then we will discuss about some marketing things and all. They are also going to be fundamentals. So yeah, you can use them in any business. Perfect. अरे भाई, ड्रॉप अ क्विक मी इन द चैट सेक्शन इफ यू आर यूजिंग मेटा एड्स फॉर लीड जनरेशन. अभी करते हो या अर्लियर यू हैव यूज्ड इट, ड्रॉप अ क्विक मी. इफ यू हैवंट यूज्ड मेटा एड्स, लाइक कभी भी लाइफ में यूज नहीं किया, ड्रॉप अ क्विक नो. Type no in the chat section if you have never used meta ads, or type me in the chat section if you are using it right now or if you have used it in past or something like that. Okay, there are a lot of newcomers जिन्होंने आज तक meta ads use नहीं किए हैं. It's fine. So this session is going to be very valuable for you because you are going to save a lot of money, obviously, and time and efforts too. But in case of meta ads, money is the primary thing, because for every single day when you are not doing the right thing with meta ads, you are actually losing money. I have learned it the hard way. So I just don't want anyone of you loses that money on meta doing some unnecessary thing which you should not be doing with meta ads. So we will clear all the fundamentals today, discuss about all those things. And yeah, it is going to benefit you. Now, it doesn't mean that you should run meta ads on your own, or if you have hired an agency, then after watching this training then you need to fire them. No, nothing like that. This training is basically for you so that you can understand more about meta ads. How do they work, what is actually meta ads, what are the things that you need to take care of, so that even if you are guiding an agency or even if you have hired an agency, you can work hand in hand with them and get better results for you. Because कोई भी एजेंसी आपके लिए कभी भी उतना अच्छे से काम नहीं करेगी जितना आप खुद के लिए करते हो. Getting my point? So to hire someone also, you need to know about the basic stuff about that particular thing. Like if you are hiring an agency to run meta ads for you, you also need to understand the basics and fundamentals of meta ads, so that at least आप उनको सही डायरेक्शन दे सको, so that at least अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो आप वो गलती पकड़ सको, so that at least अगर वो आपको पागल बनाने का ट्राई कर रहे हैं तो वो आप ना बनो. Because yeah, they do things like that. यूज फॉर बिजनेस रन कर चुका हो, बढ़िया बात है. आई कैन सी अ फ्यू पीपल रनिंग मेटा एड्स, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है. चलो, सॉर्टेड. लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू. तो अगर आप खुद से एड रन करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच फाइन. इफ यू हैव हायर्ड एन एजेंसी, देन दैट इज ऑल्सो वेरी मच फाइन. कोई टेंशन वाली बात नहीं है. द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू नो दीज फंडामेंटल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले व्हाट इज एक्चुअली मेटा एड्स. अब देखो, सबसे पहले तो मेटा इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहां पर दो जगह पर एड्स रन होते हैं मेजरली. इफ यू गाइस आर अवेयर अबाउट दैट, नंबर वन इज ऑब्वियसली मेटा, विच वाज earlier called Facebook, and the second is हमारा सबका प्यारा Instagram.
ठीक है, sorted. These are the two major platforms, the two only platforms जहाँ पर you can run ads with the help of Meta ads. No screen share. I hope my screen is absolutely visible. Drop a quick yes in the chat section if screen is absolutely visible, guys. Priya, my screen is visible to everyone else. It's some issue from your side. Please check it out. On YouTube also, yeah, my screen is visible, I guess. बढ़िया, ठीक है. Hmm. So we were discussing about, yeah, there are two platforms majorly जहाँ पर आप ads run कर सकते हैं with the help of this Meta ads thing. Number one is Meta, number two is Instagram. So today we are going to cover more about fundamentals. अगर हमारे पास में टाइम बचेगा we will do practical stuff also. नहीं तो practical हम किसी दूसरे सेशन में करेंगे, बट आज हम सारे फंडामेंटल्स और बेसिक्स के बारे में समझेंगे. व्हाट इज एक्चुअली मेटा एड्स. तो मेटा एड्स जब आप स्टार्ट करते हो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होती है. सबसे पहले यू नीड टू हैव अ फेसबुक आईडी. Number two, obviously, you need to have Instagram account also. Now, this is optional. Without an Instagram account, also you can run ads. But I will tell you about why it important to have an Instagram account to run ads. And तीसरी चीज, you need to have a business manager. And yeah, obviously, you need to have funds. And then comes more about the technicalities that you need to have ad creatives, you need to set your targeting and all those things. वो हम technical वाले part पे discuss करेंगे. But these are, I think, more or less the things that you require to run Facebook. Let me check if we have missed anything. Number one, we need a Facebook ID. Obviously, we need an Instagram account. We need a business manager. We need funds. We need a Facebook page also. Facebook page is compulsory. You cannot run ads without Facebook page. This is optional, but this is like compulsory. ये होना most important है. इसके बिना काम नहीं चलेगा. You need to have a Facebook page for sure. ठीक है? Now, Facebook ID. If you have a Facebook ID which is a old ID, जिस पे engagement होता रहा है. Engagement by engagement, I mean you have sent friend requests, you have received friend requests, you have messaged someone, you have liked someone's post, you have commented on someone's post, basic human like engagements things. So if you have an account like this, it is the best thing because ऐसे accounts के ban होने की, suspend होने की chances are the least. But if in case if you have created a new account, then the chances of getting banned are very high. In some cases, you will observe that the moment you create a new account, it will automatically get banned. If you have been running ads for a long time, कभी किसी ने ऐसा फेस किया, drop a quick me in the chat section कि आपने Facebook ID बनाई, वो instantly ban होगी, then you again try to create account, वो again ban हो गया, and things go on like that. So that is one problem. So with new IDs, you will face challenges like this. So in case अगर आपके पास में कोई पुराना account नहीं है, take it from someone else, or you can even buy it from someone else. There are vendors in market who will sell you these accounts. Obviously, they will take money for that. How much? I'm not sure about that because the prices keep on varying and vendor to vendor वो चीज भी vary करेगी. Someone will give it to you for 500 rupees. Someone might charge 5,000 rupees. Obviously, it depends upon the quality of the account also. How old is the account? How much engagement has been done? Because they also create this account and then farm that account. So this is basically called account farming. So they create these accounts, they farm these accounts, and then they sell you these accounts. So yeah, you can buy these accounts also, old accounts and with high engagement accounts, quality accounts. So a Facebook ID is obviously compulsory to run ads. After that, Instagram ID. Now, in case if you're running ads only on Meta, like it is optional that you can either run ads on Meta or on Instagram or on both. So if you're running ads only on Meta, you don't need an Instagram ID. If you're running ads only on Instagram, then you can use an Instagram ID or you cannot use an Instagram ID. It is completely optional to you. आपने कई बार देखा होगा आपको जब Instagram के ऊपर ad दिखता है तो sometimes it is running from an IG ID. When you click on this profile picture तो आपको कभी कभी कोई Instagram account खुल के दिखता है और you will see when you click on it you will find a Facebook page. तो आप दोनों तरीके से ad run कर सकते हो. Obviously, if you are using an Instagram ID to run ads on Instagram, credibility in some cases would be high because if someone clicks on this profile picture and they find your account and you have got good follower count or good content on your account, तो उससे obviously credibility बढ़ती है. But if it is just a Facebook page, तो उतना ज्यादा आपको credibility नहीं मिलेगी because वहां से Facebook page का content directly access नहीं किया जा सकता. So that is something, but yeah, you can run ads without Instagram account. That is absolutely fine. मतलब it is possible. उसके बाद में this is the most important thing that is called business manager. Now you need to create a business manager with the help of your Facebook ID. How you can do that? Just go to business.facebook.com. या फिर just type
business manager on Google, and you will find the website. Go to that. You will find the option of get started. Click on that. Create your business manager account by entering your details, and yeah, you would have your business manager account ready. Now, this business manager account will have ad accounts. Inside this business manager account, you can have multiple ad accounts depending upon the age of your business manager. Let's say if you have created a new business manager, you will have one ad account limit. Like you can create one ad account inside this business manager. But once you keep on using it, आप काफी समय तक ad चलाते हो, you spend money on that, you can create multiple ad accounts inside this same business manager only. Now, why do we need multiple ad accounts? Because in case if this account gets banned, we can use this account. If this ad account gets banned, we can use the third account. अगर सारे के सारे ban हो जाएंगे तो क्या करोगे? तो फिर दूसरा बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा, दूसरी आईडी चाहिए होगी, थिंग्स की गो ऑन लाइक दैट. दैट इज मोर इनटू द कॉम्प्लिकेशंस वाला साइड, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, इफ यू हैव एन एजेंसी और समथिंग लाइक दैट. तो बट या, you have to create a business manager, and inside that business manager you will find multiple ad accounts. समझ में आया यहाँ तक अभी तक सब कुछ? अगर ऐसा हो कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन बीच में ड्रॉप करते रहना, सो दैट मैं इन टॉपिक्स के बारे में अगर कोई टर्म समझ, बिकॉज दिस इज द मोस्ट बेसिक स्टफ फेसबुक एड्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ठीक है. उसके बाद obviously you need fund because you need to spend money to run ads on Meta. परफेक्ट, ठीक है. उसके बाद में आप फेसबुक पेज के बारे में सब कुछ पता है, सबको सबको पता है क्या होता है. आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट इज अ फेसबुक पेज. जब आप फेसबुक आईडी खोलते हो, यू हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएट अ पेज ओवर देयर. वो कर लोगे, कोई टेंशन वाले बेसिक फेसबुक पेज बस वही बनाना. एंटर ऑल द डिटेल्स ऑन योर फेसबुक पेज, जो भी वहां पे डिटेल्स मांगता है ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स एंटर कर देना, सो दैट आपका अकाउंट जेन्युइन लगे. हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट बिजनेस. रवि गुप्ता, वैलिड सवाल पूछो. हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट बिजनेस, ये ओपन एंडेड सवाल है, और मैं मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ. अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं होगा तो आंसर कभी स्पेसिफिक नहीं मिलेगा. हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट बिजनेस, मेहनत करके बना लो. डोंट एक्सपेक्ट स्पेसिफिक आंसर्स फ्रॉम मी इफ यू आर आस्किंग अ ओपन एंडेड क्वेश्चन. ठीक है, परफेक्ट. तो भाई समझ में आ गया. फेसबुक आईडी चाहिए, इंस्टाग्राम आईडी चाहिए, ऑप्शनल है. बिजनेस मैनेजर चाहिए, फंड चाहिए, फेसबुक पेज चाहिए, ये कंपलसरी है. इसके बाद में वंस यू हैव योर बिजनेस मैनेजर, उसके नीचे आपने अपना, उसके अंदर आपने अपना एड अकाउंट बना लिया. ठीक है. नाउ वंस यू हैव योर एड अकाउंट रेडी, उसके अंदर यू हैव टू क्रिएट अ कैंपेन. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर फर्स्ट, कि स्ट्रक्चर क्या होता है. यू हैव टू क्रिएट अ कैंपेन. Campaigns can be of multiple times. Campaigns can multiple types. Campaign can be engagement campaign, lead generation campaign, messaging campaign. बहुत सारी varieties आते हैं, बहुत सारे options आते हैं. हर कोई आपके मतलब का नहीं है. You need to focus on lead generation campaigns. ये कैसा दिखता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इफ वी हैव टाइम. नहीं तो हम किसी कोई सेपरेट सेशन करेंगे जहां पर मैं ये चीजें प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाऊंगा. ठीक है. यू नीड टू क्रिएट कैंपेन. कैंपेन इज लाइक ऑन द टॉप लेवल. कैंपेन के अंदर ही सारी चीजें हो रही होंगी जो भी एड से रिलेटेड आपको करना होता है, वेदर इट इज डिसाइडिंग द एड क्रिएटिव्स और डिसाइडिंग द टारगेटिंग ऑफ द एड्स और एनीथिंग लाइक दैट. नाउ इनसाइड द कैंपेन, द नेक्स्ट लेवल इज क्रिएटिंग एड सेट्स. ठीक है. उसके नीचे आते हैं आपके एड क्रिएटिव्स. सॉर्टेड, यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, सॉर्टेड. हाँ, तो सबसे ऊपर होता है कैंपेन, उसके नीचे होता है एड सेट, उसके नीचे होता है एड क्रिएटिव. नाउ इनसाइड, like inside one campaign you can create multiple ad sets, and inside one ad set you can create multiple creatives. Got it? So how will it look like? Let's say you have this campaign and you have created two ad sets inside this: ad set 1 and ad set 2. Now inside this one ad set you can have multiple ad creatives. Creatives can be poster, can be videos, can be carousel or anything like that. Got it? It can have multiple creatives, and similar goes here also. यहाँ पर भी you can create multiple, not just two. You can create 3, 4, 5. Depends upon you. How do you want to structure your campaign? Got it? This is how this goes. Now, on the campaign level, you basically decide what is the name of your campaign, what is the
Like basically the purpose of your campaign, whether it is a lead generation campaign, whether it is an engagement campaign or something like that, you decide the main agenda of the कैंपेन एजेंडा यहां पर डिसाइड होता है. ठीक है. उसके बाद में एड सेट के लेवल पर व्हाट यू डिसाइड इज, लेट मी राइट इट ओवर हियर. हाँ. सो कैंपेन लेवल पर यू बेसिकली डिसाइड द एजेंडा कि करना क्या है भाई, मतलब व्हाट डू यू एक्चुअली वांट आउट ऑफ इट. डू यू वांट लीड्स, डू यू वांट एंगेजमेंट, और व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ इट. तो यहाँ पर एजेंडा डिसाइड हो जाएगा. उसके बाद में ऑन द एड सेट लेवल यू बेसिकली डिसाइड द टारगेटिंग. whom do you want to, क्या चाहते हो कि आपका एड कौन देखे. whether it is housewives, whether it is working professional, whether it is students, what age group, what location, what interest, what language, all those things you can decide at the ad set level. उसके बाद में you have the creatives level where you decide what to show, what video, what image, what do you want to show to your leads. That is something that you decide at the level of creatives. Now, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन, सारी चीजें समझ में आ रही है यहां तक. सॉर्टेड. यस यस यस, ओके परफेक्ट. तो नाउ अब हम देख थोड़ा सा एड सेट और एड क्रिएटिव्स के बारे में और समझते हैं बेसिकली होता क्या है. Why do we need to have multiple ad sets, or why do we need to have multiple creatives? That is one question that people ask me often जब ये वाली चीज उनको समझ में आ रही होती है कि why do we even need to have multiple ad sets, or why do we need to have even multiple creatives? Why can't we just create one ad set or one creative? You can obviously do that, but to do better targeting and better testing, you need to have multiple ad sets. Let's say you want to target, let's say you are selling some product which you want to sell to वर्किंग प्रोफेशनल्स. एक सेकेंड, पेंसिल कहाँ गई. लेट्स से यू आर सेलिंग सम प्रोडक्ट व्हिच यू वांट टू सेल टू वर्किंग प्रोस. ठीक है. नाउ यू नो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम गुड़गांव, मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद can actually buy a product. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन जगहों से, बिकॉज मैक्सिमम वर्किंग प्रोफेशनल्स इन जगहों पर पाए जाते हैं. ये प्रजाति मैक्सिमम इन्हीं जगहों पर पाई जाती है बिकॉज यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है. ठीक है. अब उसके बाद में यू नीड टू डिसाइड, लाइक यू नीड टू फिगर आउट कि मैक्सिमम सेल्स आपको कहाँ से आने वाली है. बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इट इज नॉट लाइक कि इफ यू आर गेटिंग 100 सेल्स, then you would be getting 20 sales from here, 20 from here, 20 from here, 20 from here, 20 from here. Maybe it would be like you get 40 sales from Gurgaon, 10 from here, 10 from here, 10 from here, 50, 60, 70, and 30 from here. But how will you get to know कि कहाँ से कितनी सेल आई. Let's say if you are creating one campaign, one ad set, and one creative, then you will still get 100 sales, but you will never get to know कि which region is giving you the maximum number of sales. समझ में आ रहा, कॉमन सेंस की बात चल रही, इतना समझ में आ रहा ना. अगर आपने सब जगह लाइक सारी सिटीज को एक ही जगह पर टेस्ट कर लिया है, देन यू विल नेवर गेट टू नो कि ज्यादा सेल्स आपको कहाँ से आ रही है. एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक कि सब जगहों से इक्वल सेल्स आने वाली है. किसी जगह से तो आपको ज्यादा सेल्स आने वाली है ना. समझ में आ रहा है. तो टू फिगर आउट कि कहां से आपको ज्यादा सेल्स आ रही हैं, यू विल बेसिकली टेस्ट द थिंग्स. नाउ हाउ विल यू टेस्ट द थिंग्स. द इजीएस्ट वे टू डू इज कि आपने एक कैंपेन बनाया एंड इनसाइड दैट यू कैन लॉन्च 5 एड सेट्स. ठीक है. 5 एड सेट्स आपने बनाए. एक में आपने बनाया दिल्ली, एक में आपने बनाया गुड़गांव, एक में आपने क्या था और हमारे पास में मुंबई है, फिर आपने पुणे सिलेक्ट किया, फिर आपने हैदराबाद सिलेक्ट किया. गॉट इट. अब इस तरीके से यू विल गेट टू नो कि सेपरेटली फ्रॉम ईच सिटी कितनी सेल्स आपके पास में आ रही है. गॉट इट. समझ में आए. इसलिए हम डिफरेंट एड सेट्स क्रिएट करते हैं. दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन, बट इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटरेस्ट टारगेटिंग. लेट्स से आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग में यू गॉट मल्टीपल ऑप्शंस लाइक पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टीसीएस, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन एसेंचर, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन कॉग्निजेंट वगैरह वगैरह. ऐसी कुछ कंपनीज के नाम आपने डाल दिए
एंड नाउ यू वांट टू टेस्ट कि किस जगह किस इंटरेस्ट टारगेटिंग से यू आर गेटिंग मोर सेल्स. नाउ यू कैन क्रिएट एड सेट्स फॉर इंटरेस्ट टारगेटिंग ऑल्सो. इवन यू कैन पेयर दीज टू एंड मे बी एक और सिटी आपने ऐड कर लिया, दो दो सिटीज को आप पेयर अप करके भी लेके आ सकते हो. सेम रीजन की दो सिटीज को आपने पेयर अप कर दिया तो दैट आप थोड़ी और नैरो टारगेटिंग कर सको. बिकॉज जितने ज्यादा एडसेट्स आपके बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आपको अपना बजट भी बढ़ाना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए. इट इज नॉट लाइक कि विद बजट ऑफ 50 रुपीज यू कैन टेस्ट 10 डिफरेंट सिटीज. बिकॉज आपको पता ही नहीं लगेगा, आपका बजट इतना कम है, आपको कभी पता ही नहीं लगेगा सेल्स कहाँ से आ रही है. सर कैन यू कैन टेल स्टूडेंट्स आल्सो टारगेट ऑडियंस. साई किरण सेम चीज है, कॉन्सेप्ट समझो. मैं यहाँ पर कोई कैंपेन चला के नहीं दिखा रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट बेच के नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात भी नहीं करी है. ठीक है. द फंडामेंटल्स एंड द कॉन्सेप्ट्स आर गोइंग टू बी सेम. आप इसको किस ऑडियंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज समथिंग विच इज अप टू यू. सॉर्टेड. अब इसके बाद में बात आती है, लेट्स से अब आप दिल्ली में भी जब एड चला, जैसे गुड़गांव में आप एड चला रहे थे, आपने एक एड क्रिएटिव बनाया, जैसे C1, एक और एड क्रिएटिव बनाया C2, एक और एड क्रिएटिव बनाया C3. अब ऑब्वियस सी बात है सारे क्रिएटिव डिफरेंट रहने वाले हैं. मे बी किसी एड क्रिएटिव में आपने किसी मेल मॉडल को यूज किया, किसी एड क्रिएटिव में आपने किसी फीमेल मॉडल मॉडल को यूज किया, किसी एड क्रिएटिव में आपने ऑरेंज कलर यूज किया, किसी एड क्रिएटिव में आपने रेड कलर यूज किया. डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स समझ में आ रहा है. इसीलिए आप देखते हो कि हर कोई कोच या कोई भी बिजनेस ओनर जो भी एड्स रन करता है, किसी भी टाइप के एड्स रन करता है, दे यूज डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स, दे यूज सेम हेडलाइंस बट स्टिल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स. बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी चीज मार्केट के साथ में ज्यादा रिलेट करने वाली है. नाउ हाउ विल यू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू वर्क द बेस्ट इन द मार्केट? उसके लिए यू नीड टू टेस्ट आउट दीज थिंग्स, एंड when you will test out these things, you will find you are getting, let's say, 40% sales from here, 30% from here, 30% from here. Now if I know, like let's say इस तरीके से मैंने एक imaginary campaign बनाया and I'm testing out the things and I get to know कि I'm getting 40% sales from this particular campaign and I'm getting 40 almost 20-30% of the sales from this Delhi city. Now what I will do, अगला step क्या होगा, to scale up my campaign I will create another campaign जहां पर I will choose Delhi city with the C1 type of एड क्रिएटिव जो मैंने यूज किया था, और इसके जैसे मैं सिमिलर और एड क्रिएटिव्स बनाऊंगा. आई विल क्रिएट सिमिलर एड क्रिएटिव्स बिकॉज आई नो कि इफ दिस इज वर्किंग तो इसके जैसी चीजें भी काम करेंगी एंड आई विल एलोकेट मोर बजट ओवर हियर. व्हाई मोर बजट ओवर हियर? बिकॉज दिस particular ad set and ad creative can give me more sales in less budget. Let's say if I'm getting one sale over here for 50 rupees, तो वही सेल्स शायद अगर मैं गुड़गांव या मुंबई कहीं पर टारगेट करूंगा मुझे 70 रुपीज की पड़ेगी. ना दिस माइट नॉट साउंड अ बिग अमाउंट टू यू, बट जब ये स्केल पर हो रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, किस तरीके की लीड्स आप जनरेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा वेरी करता है. दैट इज वाई आप में से कई सारे लोग देखते होंगे आपके CPL बढ़ते हैं. समझ में आपके कभी किसी के साथ में ऐसा हुआ कि यू आर रनिंग एड्स एंड योर CPL इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली? Some day it was 5 rupees, then another day 10 rupees, 15 rupees, 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees. It goes like that. इट इंक्रीजेस बिकॉज यू आर नॉट टेस्टिंग विद योर एड्स. आपको अपने एड्स के साथ में क्या टेस्ट करना पड़ेगा? और टारगेटिंग टेस्ट करनी पड़ेगी और एड क्रिएटिव्स टेस्ट करने पड़ेंगे. मे बी द एड विच यू आर रनिंग इज नॉट रेजोनेटिंग विद द ऑडियंस ऑफ हैदराबाद, बट इट वुड रेजोनेट विद द ऑडियंस ऑफ दिल्ली. हर जगह का अपना लोकल एक्सेंट होता है. लेट्स से इफ आई हैव रिटन, हैदराबाद की लोकल लैंग्वेज क्या होती है मुझे नहीं पता. लेट्स से बट इफ आई हैव क्रिएटेड अ एड क्रिएटिव जिसमें मैंने हैदराबाद की लोकल लैंग्वेज में हेडिंग लिखा हुआ है and I'm running it in Delhi. Will I get results? No, I won't get results. मुझे वो एड क्रिएटिव हैदराबाद वाली जगह पे ही चलाना पड़ेगा. बट लेट्स से मैं वो एड क्रिएटिव दिल्ली में चलाया जा रहा हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ मेरा CPL कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने टेस्ट नहीं किया. मुझे उस क्रिएटिव को यहाँ पर टेस्ट करना था और शायद कोई हिंदी या इंग्लिश वाला क्रिएटिव दिल्ली में टेस्ट करना था, बिकॉज दिस इज द नेटिव लैंग्वेज ओवर हियर. अरे समझ में आ रहा है? उसके बाद में लेट्स से मैंने एक एड इमेज बनाया एंड उस एड इमेज के ऊपर CPL बढ़ता जा रहा, तो मैं क्या करूंगा? आई नीड टू क्रिएट मोर एड इमेजेस, आई नीड टू क्रिएट मोर एड वीडियोस, बिकॉज जब मैं ज्यादा टेस्ट करूंगा तब मुझे पता लगेगा मेरी ऑडियंस किसके साथ में रिलेट कर रही है एंड एट व्हाट काइंड ऑफ एड क्रिएटिव्स आई एम गेटिंग लेस CPL. आई वुड नीड देन आई वुड क्रिएट मोर सिमिलर एड क्रिएटिव्स लाइक दैट. बट नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं? दे क्रिएट वन कैंपेन, वन एड सेट एंड दे क्रिएट ओनली वन एड वीडियो और टू एड वीडियो थ्रू आउट, एंड उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग देयर एजेंसी और themselves और मेटा एड्स की भाई एड से CPL बढ़ रहा है, एड से CPL बढ़ रहा. डू यू guys ever know कि in a month how many ad creatives do we test? Like I also run ads for my business. Do you have any idea how much ad creatives I test for my coaching business itself?
बाकी एफिलिएट वगैरह के जो एड्स चलते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग फॉर प्रोडक्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो तो एक अलग चीज है। बट फॉर माई कोचिंग बिजनेस इटसेल्फ, वी एटलीस्ट ट्राई 50 to 70 images and at least around 20 30 videos every single month, and they all are new. हर महीने 20 से 30 नए वीडियो बनते हैं, हर महीने 50 से 70 नए इमेजेस बनते हैं। एंड इफ वी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट एनीथिंग लाइक दैट, तो ये नंबर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? मजा आता है? नहीं। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सीपीएल एंड गेट क्वालिफाइड लीड्स एवरी सिंगल टाइम। इफ आई डोंट डू दिस थिंग, either my CPL will go very high or I will start getting junk leads. गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपका सीपीएल बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है? टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एड सेट के साथ में, टारगेटिंग के साथ में टेस्टिंग करनी पड़ेगी, क्रिएटिव्स के साथ में भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपकी एजेंसी आपको नहीं बोल रही है टेस्टिंग करने के लिए, तो आप जाके उनसे बोलो कि भाई मेरे लिए और क्या क्या टेस्टिंग करी है आपने, क्या डिसाइड किया, उनसे जाके पूछ लो आप। क्योंकि ये ड्यूटी आपकी बनती है। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस आपका है, और मैंने बताया कोई एजेंसी आपसे ज्यादा आपके बिजनेस से प्यार नहीं करती। कोई भी आपके अलावा आपके बिजनेस से आपसे ज्यादा प्यार नहीं करता। You need to push them. If they are not testing much, tell them, yeah, I think we need to test more ads because our CPL is increasing. I think we need to test more ads because I'm not getting qualified leads. I think we need to test more targetings because I'm not getting qualified leads. If you will ask them, then they will not say no. But if you will never ask them, they will just give you random reasons. तो ये चीज समझना जरूरी है। समझ में आया यहाँ तक? Got it? कोई क्वेश्चन अभी? What to do if ad creatives are so aptly created for working professionals, even though people who are new to Instagram are responding to it? Okay, that is the next topic that we are going to discuss about. That is market to message. आई गेस आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने कोई एड क्रिएटिव बनाया, एंड वो एड क्रिएटिव को मैं टेस्ट कर रहे हूँ, बट आई वांट टू टारगेट वर्किंग प्रोफेशनल्स, बट आई एम नॉट गेटिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स, बट बाकी लोग भी उस एड क्रिएटिव के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इज इट लाइक दैट? हेलो? किसी और के साथ में प्रॉब्लम आती है कि यू क्रिएट एड क्रिएटिव फॉर वन काइंड ऑफ टारगेट ऑडियंस, बट उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आपके पास में आते हैं। आती है प्रॉब्लम? ओके, बहुत सारे यस, कोई बात नहीं। तो उसकी उसका रीजन है मार्केट टू मैसेज फिट। अगर आपका मैसेज मार्केट के साथ में फिट नहीं कर रहा है, या फिर आपका मार्केट उस मैसेज के साथ में सही फिट नहीं बैठ रहा है जो आप मैसेज मार्केट में दे रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लेट्स से आई वॉन्ट टू सेल अ प्रोडक्ट टू वर्किंग प्रोफेशनल्स, एंड मैंने एक एड क्रिएटिव बनाया, एंड मैंने दो एड क्रिएटिव्स बनाए लेट्स से, ठीक है। एक एड क्रिएटिव है जिसके ऊपर मैंने लिख दिया अटेंशन वर्किंग प्रोफेशनल्स, और उसके बाद में अपनी हेडलाइन लिखी, सब हेडलाइन लिखी, और नीचे सीटीए दे दिया। और दूसरा एक मैंने एड क्रिएटिव बनाया जिसमें मैंने हेडलाइन लिखी, सब हेडलाइन लिखी, और सीटीए दे दिया। व्हाट डू यू थिंक, किस वाले एड क्रिएटिव के ऊपर ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स रिस्पॉन्ड करेंगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीपीए, I'm not talking about the reach or anything like that, but I'm just asking you, let's say if you have created two ad creatives, one is having call out of attention working professionals, the second is having no call out, but the headlines and the CTA are the same. What do you think? Which ad creative will generate better results for you? First one, right? Common sense की बात है, obviously. अब इसी तरीके से you need to understand things. Your ad creatives, your ad videos need to be more and more relatable to your target audience so that they can understand more about it. Let me show you some examples directly समझ में आएगा, because we recently created some ad creatives for our clients. Let me check it out कहाँ पर है. So we were actually creating ad creatives for the target audience of housewives. Let me see, where is it? Hmm. Okay. Now, we created this ad creator for housewives, but means the target audience was housewives. So you can check out the headline.
tired of being financially dependent on your husband? It's time to take control of your income with simple online skills. Fill the form now. Now, when you create an ad creative like this, now this is a simple ad creative, but what if I just add one line at the top that is attention housewives. So this is basically called a call out. Do I have better chances of attracting housewives now? Yes. Do you see the ad image in the background? By the way, it is created via AI. So AI की मदद से image बनाया गया है. And that is also of a housewife working in a kitchen, and that is just to build more credibility and more relatability for the audience of housewives, so that they can relate with it and respond more on this ad. Getting my point? But what if I was not using any image in the background, or if I was using any random image of a hill or a beach or something like that in the background? Will it build relatability? No. Feeling invisible as a homemaker. Start earning online and show the world your true worth. The ad image. Now, how you can build relatability? ये भी एक factor आता है. How you can get a better message to market fit. Now, there are multiple variables for that. The number one is obviously your image. अगर हम इमेज टाइप के एड क्रिएटिव्स की बात कर रहे हैं, नंबर वन इज योर इमेज, देन इज योर हेडलाइन, देन इज योर सब हेडलाइन एंड योर कॉल आउट ऑल्सो, योर CTA ऑल्सो. तो दीज आर लाइक अ फ्यू मेजर थिंग्स जिनके बेसिस पे आप मार्केट टू मैसेज को क्लियर कर रहे होते हैं. डोंट नो वेयर टू स्टार्ट विद ऑनलाइन अर्निंग. अगेन, image of a housewife working at home, kids playing in background, and all these things. Why? Because to build relatability. Is your education going to waste because you are not earning? Now, again, a photo of a housewife thinking about education and something like that, just to build more relatability. And we have created multiple ad images like this. Can you see, like, there are almost, I think, 30, 40 ad images. इस तरीके के ad images बनाए गए हैं, just to test out the things. And you know what? To your surprise, all of these ad images won't work. Can't see. I hope my screen was shared with everyone, right? Archana, everyone else can see my screen. मतलब अभी तो मैंने ऑफ कर दी है, but जब स्क्रीन शेयर हो रही थी तब सब देख पा रहे थे. चलो एक बार, let me share my iPad screen once again. कुछ तो चैलेंज है, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है अभी मेरे आईपैड की. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन. बढ़िया. So we were talking about ad images and how you can get better relatability with the help of ad creatives. So in case of images, you need to have better headlines, better subheadlines, better call out, better CTA, and relatable images so that you can build more relatability with your target audience. समझ में आया ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? Let's say if in those ad images जो मैं भी आपको दिखा रहा था, I won't have that housewife in the background, that image of a housewife in the background. Will it be relatable to the housewives? No. Relatability कम हो जाएगी. What if there was a no call out? Relatability कम हो जाएगी. What if there was not that headline? Relatability कम हो जाएगी. So to ensure that you are targeting the right audience, you need to build creatives जो उस audience के साथ में relatable हो. Now, for that, you obviously need to do market research. And how to do market research? That is something which we teach you in the week one only of the DBT Lead program. While you fill up their that customer research wala document, in that customer research wala document, you actually research about your target audience. So there only you will get to know about what should be the headline and what should be the creative to be tested in the background. In case if you have hired an agency, तो ये उनकी duty होती है. You just need to guide them about the target audience. They will do the work. Then you can cross check the work and make them execute the things. But अगर वो नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, then it is your duty to tell them that what they need to do. समझ में आया what is the problem, why you're not getting targeted leads, why you're not getting the leads that you want?
let's say if I like, and इसके केस में बहुत सारी टेस्टिंग हो सकती है, मतलब I'm just trying to share the most basic information with you so that you guys don't get confused. There are tons of books जो आप इस चीज के ऊपर पढ़ सकते हो कि ये market to message कैसे better किया जा सकता है, how you can create better messaging. Let's say if I have to target the audience of Delhi, then I would use a picture of Connaught Place. And if I have to target the audience of Mumbai, I would use a picture of Gateway of India. Why? Because Mumbai people will relate more with Gateway of India or maybe Juhu Beach or something like that. And Delhi people will have more relatability with Connaught Place. Getting my point? If I have to target Hyderabad, then I would maybe target Charminar. Use an image of Charminar or something like that and उसके ऊपर headline लिखूंगा, things like that. That is the reason आपने देखा होगा हर जगह पर अलग अलग तरीके के ad creatives same headline के साथ में you will find different ad creatives and different videos and things like that. Why? Because they want to target different categories of people. Let's say if I have to target business owners who rich business owners. Maybe if I have to sell a product of 5 lakh rupees to business owners, what would be my targeting? I won't say that if you want to grow your business, come to me. Because if इसको टेस्ट करके देखते हैं, मैं आपको थोड़ा डिफरेंस के एग्जांपल के थ्रू डिफरेंस बताता हूँ. Let's say you have this one headline. If you want to grow your business, message me. ठीक है? Let's say, and second headline is if you are making 5 lakh per month and you want to scale up to 20 lakh per month, message me. Now tell me in the chat section if this is the headline one and if this is the headline two, where will I get rich business owners? Rich business owners. Common sense से बताना, if I am running ads on these two headlines, in which particular headline, if I test it out on ads, where I will get rich business owners? Second, why? Because of the messaging. समझ में आ रहा, अभी डिफरेंस समझ में आ रहा? What do I mean by market to message fit? If I am selling a 5 lakh rupees ka product, I will use this headline. But obviously, uske flip side bhi hai. If I'm using this headline, I will get less leads. The cost per lead would be high. The cost per lead would be high because there would be lesser number of business owners who are making 5 lakh rupees per month. But I know even if I'm getting high CPL, it would be okay because I'm getting qualified leads. And in this case, let's say if I have to sell a low ticket product, maybe a product of 5,000 rupees, then I would use a headline like this because I want to get more people into my funnel because I'm selling a low ticket product. I need to sell to more people to get more profits. But if I'm selling a high ticket product and I want qualified people in my funnel, I will use better messaging, which will target directly to my audience of rich business owners. And in that case, my CPL would be high. Why CPL would be high? Because the people in this category would be less and the people in this category would be high. Common sense की बात है. People who are business owners is obviously more than the number of people who are business owners is obviously more than the number of people who are making 5 lakh rupees per month. The number of business owners who are making 5 lakh rupees per month. समझ में आया दोनों चीजों के बीच में difference? Now you need to think about what is actually your ideal target audience. That is why inside like our program हम आपसे सबसे पहला step यही करवाते हैं, that is to research about your target audience so that you have the clarity about your target audience, and that is the thing that you are going to use in your reels, in your ads and all those things. समझ में आया? Archana, I hope आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला होगा. Why you are getting other people also inside your funnel. Now, if you improve your messaging, obviously, let's say if you're getting 50% targeted leads right now, if you improve your messaging, that number would increase from 50 to 60, 70, 80, 90. उसको 100% पहुंचने में obviously it will take a lot of efforts and it is kind of impossible to make it 100%, but still you can optimize it more if you have better messaging. समझ में आया? Sorted any questions till now? Understood. We'll work on it. Perfect. Perfect. Get your agency guy on and उनके साथ में बैठ के इस चीज के ऊपर काम करो. Give suggestions to them. Take suggestions from them. Give them ideas. Take ideas and you will work like that. If you have any questions, you can raise your hands and I would be taking up questions now. ठीक है? Nandini, do you have a question? That is why you have raised up your hand? या ऐसे ही? तो मैं एक काम नहीं करता हूँ अभी के लिए. I am lowering down the hands of all the attendees on Zoom. If you have any questions to this thing, just raise your hand once again.
Okay. Srinandani, you have the access. You can unmute yourself. Hi, Divyanshi. So Hello. the Yeah. question which I have is, uh, I'm targeting for the conclave now. Hmm. I started running that because my account has been shadow banned. My main account, which was having 15K followers, is now shadow banned. So I'm Hmm. planning to go for the ads. Okay. So Hmm. taking the leads on everyday basis. Okay. So now I'll be tracking those leads, and then I'll be going about the discovery call, and then I'll be asking them to come back to my WhatsApp. Right. That is how the funnel is. You are running lead form ads, right? Yes. Yeah, the leads will come on your LMS, and from there you will call them and then invite them on your WhatsApp. All right. So in this, I already have some set of people who I have the bell connected with 10 to 12 KVs. Srinandani, your voice is actually not clear. I cannot like, matlab, Is your that voice is not clear. okay? I feel there is some issue with your mic or something like that. I'm sorry about it, but is that okay? Uh, um, let's try it out. Like, yeah, what was your question? Okay. So I already have like 12 leads in my mobile phone. So how can Hmm. we make them active? How can you make them what? Active. How can you make them active? I'm not actually getting a question. The leads that came to your WhatsApp after you have done the discovery call with them, right? Sorry, your voice is not clear. The leads have come to your WhatsApp after you have done the discovery call with them, right? No, actually, what I'm asking is, from the past 6 months, I am Huh. having almost 10 to 12 leads in my mobile phone. Okay, so now Okay. almost a few of the leads, or I should say, maximum of leads are dead. Okay, I'm not receiving any response from them. So now I wanted to have some connection with them so that I can, like, if there is any possibility, they can also be converted, right? So for that, what can Hmm. I ask you? Then in that case, I guess your business coach would have already told you about that strategy of reigniting your old leads. So where you will give them certain messages, you would follow a messaging sequence, you would send some messages to your leads via broadcast, and then you would invite them on call. So I hope you are using that strategy already, right? Okay, so I had some issues with the saving of the number, and she said we will be putting in the watch track. So I wanted to start it, but before that, I just wanted to check if there is any other options. That's it. Oh, to revive your old leads, the only way which you can use on WhatsApp is obviously this reigniting your old lead strategy that your business coach has already told you. Okay, And the other ways that we can use are not so feasible and they're very expensive because we are not sure that how much conversion we can get out of it. Because this is the only free method that you can use. Apart from that, even if you go with email marketing or any kind of WhatsApp marketing API, if you use paid WhatsApp marketing or something like that, that is going to take a lot of money from you, but not sure what kind of results you can get. That is why, in case of cold leads, the only strategy that we use is this thing only that you are already using. And I guess you are already getting sales out of it, right? no, for this for whole month, I was not getting any lead and the sale as well. So I'm just targeting on the March, and I'm planning to get 300 to 300 leads per day so that I can have 7,000 leads before I go into conclave. You got a few sales last week, na? Yeah, last week I got few sales like from 26, 27, 28 that alone, and not this whole that I was not getting any sales. All right, I got it. And these sales, like these 4 5 sales were from your old leads only, na? Yeah, yeah, exactly. Yeah, that was because of that strategy only. Use it more, and you still can get more sales also from in this month also from that same strategy. Use it more, and you will get better results. Apart from that, yeah, focus more on your ads so that you can get new leads also. So yeah, that is the only thing that you can do. All right, thank you so much. And I have not been, I'm not able to join with the first 20 minutes. Can I have the recording session? Like, where can I Yeah, find? you will get the recording. You will get the recording. Ask your business coach, and they will help you with the same. All right, yeah, thank you so much. All right, perfect. बढ़िया. All your questions, guys. Drop your questions in the chat section. I would be taking up some questions from YouTube also. If you guys have any question, you can drop it in the chat section. And yeah, or anyone on the Zoom, you can raise your hand so that I can unmute you and you can ask your questions if in case you have. Srinandani, do you have more questions?
Really sorry, I just forgot to ask one question. So Hmm. so Sanju is helping me with the best reels, no, the competitor research and all. But from my Hmm. end, if I wanted to search for the competitor reel in affiliate industry, how can I go about it, Divyanshu? Check out the top earners of the industry who are creating content for the similar kind of audience that you want to do. So Check where out how they create content. yeah, so I have been trying that. So no, I was checking in the leaderboard from my digitalpreneur, and then I have been checking their name on the Instagram, but it is really very hard for me to track those people. So in that case, do you have any suggestions? Yeah, it is actually hard, and that is why everyone else is not doing it. And if you do it, you will get results. So it is hard to find their IDs, maybe. But yeah, you can find some easy ways. But there is no alternative way to do audience research, obviously. But Okay. maybe you can ask someone in your network who can help you get those IDs, or maybe you can ask your company directly to help with those IDs so that you can just have a look at their profile. But there is no alternate way to do Okay. audience research. This is the only way. It would Okay. take efforts, and obviously that is the reason that everyone else is not doing it. So Oh, if you do it, okay. then you will get some benefit out of it. Thank you. Thank you so much. I was thinking Hmm. if there is any way so that I can figure it out. But yeah, your suggestion is giving me a much clearer vision. I'll make sure I'll do it. Yeah. Sure, all the best. Thank you. Thank you so much. Okay, guys. यूट्यूब की जनता कहाँ हो गई? किसी को कुछ सवाल नहीं, सबको सब कुछ समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, so that you can get updates about future live streams also, because we keep on doing these live streams at least once a week every time. So if you want to get updates about all these things and other YouTube videos also, then you can just hit on that subscribe button and like this stream. Let me check if we have any questions. No, everything seems good. सबको सब कुछ समझ में आ रहा है. So yeah, what more topics do you want me to do live stream on and kind of these sessions? Last week हमने we talked about auditing Instagram profiles. आज हमने Facebook ads के बारे में बात करी. I'm not going too much into the technicalities of Facebook ads, like how to set up a campaign and all those things, because that is something जिसके आपको tutorial videos मिल जाएंगे YouTube पे बहुत easily. I wanted to tell you about the fundamentals, because no one tells you about such basic and fundamental things. So I hope this particular training gives clarity to a lot of beginners who are absolutely new to Facebook ads, and this would help you in a manner जहाँ पर you are hiring an agency or doing something like that. Got it? So are we done for today? किसी के और कोई questions तो नहीं दिख रहा है मुझे. It was a short stream. चलो ठीक है, टॉपिक के बारे में बहुत बातचीत होगी. अगर किसी को कुछ और बातचीत करनी है तो बताओ भाई. आई वुड बी हियर फॉर द नेक्स्ट 5-10 minutes. उसके बाद वी वुड बी एंडिंग द लाइव. Anyone who is attending on YouTube, बाकी जो लोग Zoom पे भी attend कर रहे हैं, this is something that you can share with your affiliates too, because it is going to help them also. Because जो YouTube पे live stream चल रहा है, that is absolutely free, and I have been believing in this thing throughout my life, and इसी reason की वजह से YouTube live stream हमने भी start किया. So if you guys would have been listening to the strangest secret जो हम आपको DBT lead program के अंदर बताते हैं, there's this one line that says कि you cannot become rich without enriching others' life. So we created this entire program community for this thing only, so that बाकी लोगों की हेल्प करी जा सके उन चीजों के थ्रू जो मुझे आती हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं. Now this live stream is also based on that fundamental only. So this is something जिसके ऊपर I've been believing throughout my life, and it has been helping me in all the possible manners. And अगर आप भी ये चीज और लोगों के साथ में शेयर करते हो, that would be a great help to them. And if you are helping them, then obviously you are helping yourselves also in some way or the other way. वो चीज आप तक आती ही है. तो भाई शेयर करो to make others also rich. But yeah, cannot see more questions. Archana ji. Archana, I have given you the access. You can unmute. Yeah, hi Divyansh. Can you hear me? Anji. Yes, I can hear you.
सो दिव्यांश, मेरा क्वेश्चन ये है, बिकॉज आई थिंक लास्ट सेशन आपने गूगल शीट के ऊपर लिया हुआ था। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व सो फार, जो पहले लीड जनरेशन होती थी उसमें हम क्या करते थे कि डिस्कवरी कॉल करते थे, एंड देन हम्म वी ट्राई टू एक्सप्लोर द एक्सपर्ट मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन एंड देन गो हेड फर्दर। तो हम्म मुझे लास्ट टाइम ये समझ में आया था कि जो लीड जनरेशन की एड चल रही थी ना, मेरी साउथ की तरफ चली गई थी, जहां पर उन्हें जो हमारा वीएसएल है, जो जो इंग्लिश है बेसिकली, तो वो हम्म उन्हें समझ में तो आ नहीं रहा था बेसिकली, जो मेरा पर्सनल वीएसएल था। एंड देन ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो डायरेक्टली कॉल पे नहीं आना चाहते, बिकॉज दे आर मोर कंफर्टेबल विद द चैट एंड कॉन्वर्जेशन। दोज हु आर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल, दोज आर हम्म नॉट सोशलाइज्ड और समथिंग। सो संजू हम्म ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि अगर आप फर्स्ट मैसेज करते हो कि फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट फॉर द डिस्कवरी कॉल, मतलब एंड देन वी टेक इट फर्दर। सो बहुत लोग आपको यस नहीं बोलेंगे, बहुत लोग एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे। So at that हम्म moment of time, what you do, you take that conversation further with chat and messages only. ठीक है, ताकि वो हम्म जाए ना लीड आपके हाथ से, हो सकता है कि वो आगे हम्म कन्वर्ट हो या ना भी हो। अभी आपने हम्म बोला कि गूगल शीट में, आपने क्या बोला कि गूगल शीट में वो रजिस्टर होगी उनके सारे डिटेल्स, एंड देन वी हैव टू टेक अ कॉल, मीन्स वी हैव टू कॉल देम एंड देन ब्रिंग देम टू व्हाट्सएप एंड टेक इट फर्दर एज अ डिस्कवरी कॉल। अब जब हम्म यही सिचुएशन वहां आएगी कि कोई गूगल शीट में उनकी डेटा अपडेट हो गई एंड वो कॉल पे आना ही हम्म नहीं चाह रहे, देन क्या करूंगी हम्म, मैं? मतलब अगर वही चीज सेम मैकेनिज्म वी फॉलो फॉर दोज ठीक है। सॉर्ट ऑफ पीपल। I हाँ। got a question, अर्चना जी। अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब कोई पर्सन आपके व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, लेट्स से अभी अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज कि एक ऐड चलता है, ऐड से द लीड्स कम ऑन इंस्टाग्राम, फ्रॉम देयर दे कम ऑन व्हाट्सएप एंड देन यू कॉल देम डायरेक्टली। नाउ या जब एक लीड ऐड से इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर आ रही है, देयर एक्सपेक्टेशन नॉर्मली इज इफ दे आर कमिंग ऑन व्हाट्सएप देन दे विल हैव अ चैट विद यू, राइट? या डेफिनेटली Because they करेक्ट। come on your WhatsApp. WhatsApp क्या है? चैटिंग प्लेटफॉर्म में। They are not actually expecting a call from you. That is why they will see कि अरे यार ये तो उसी पर्सन का कॉल आ रहा है जिसको मैंने अभी WhatsApp पे मैसेज किया था। They might have ignored your call. But अभी क्या चल रहा है? From the ad they fill up a lead form and from there the data comes onto your lead management system. आपके LMS के ऊपर डेटा आ जाता है automations ओके। के थ्रू। Now if you are filling up a form on ad एंड आप कहीं व्हाट्सएप या कहीं पर भी नहीं जा रहे, तो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मैंने अपना फोन नंबर भरा हुआ है तो मेरे हम्म। को कॉल आएगी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल मुझे कॉल आएगी। एंड पीपल आर ऑल्सो हाँ, इन दिस एक्सपेक्टेशन ओनली, तभी वो अपनी डिटेल्स फिलअप करते हैं। सो इफ यू विल अंडरस्टूड कॉल देन दे विल अंडरस्टूड। एक्चुअली पिक अप द कॉल। ये चैलेंज यहाँ पर नहीं आएगा। व्हाई एम आई सेइंग दिस थिंग? बिकॉज वी हैव एक्चुअली टेस्टेड इट आउट विद हंड्रेड्स ऑफ लीड्स एंड व्हाट वी हैव सीन हम्म। इज आउट ऑफ 100 लीड्स, पहली बार में यू विल सी देयर विल बी ऑलमोस्ट 30-35% ऑफ द लीड्स हु विल पिक अप योर कॉल। एंड to get 80 to 90% of the leads on your WhatsApp, you might need to call them 3 to 4 times. लेट्स से आपने लीड को भी, आपके पास में आज के दिन में 50 लीड्स आई, यू कॉल देम एट वंस एंड 50 में से ओके। देयर वुड बी लेट्स से 10 पीपल हु पिक अप द कॉल एंड दे कम ऑन योर व्हाट्सएप, रेस्ट 40 डोंट पिक अप द कॉल। दैट डजंट मीन कि वो कॉल पिकअप करना नहीं चाहते हैं या वो आपको नहीं जानते, बिकॉज हाँ, अभी तो उनको पता ही नहीं ना, वो भी उनके पास में आपका कॉन्टैक्ट तो है नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दे माइट तो मिस द कॉल ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग। हाँ। एग्जैक्टली दे आर एक्चुअली मिसिंग द कॉल बिकॉज मे बी बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग, मे बी बिकॉज कुछ भी लाइफ में उनके काम चल रहा था, कुछ भी हो रहा था जिसकी वजह से वो कॉल पिकअप नहीं कर पाए। तो दे आर एक्सपेक्टिंग अनदर कॉल फ्रॉम यू बिकॉज दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं। एंड just out of data, what we can say is if your target audience is working professionals, try calling them after 6 p.m. in evening. If your target हम्म। audience is housewife, try calling them in afternoon because these are the probable timings जहां पर ये audiences free होती हैं, so the करेक्ट pickup करेक्ट। ratio is high. हाउसवाइफ्स के लिए आफ्टरनून एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के आफ्टर 6 और 6:30 7ish ऐसा कुछ टाइम पे कॉल करो, यू विल गेट बेटर हम्म। पिकअप रेट्स। एंड अगर एक बार में आपने लीड को कॉल किया है, कॉल पिकअप नहीं हुआ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, क्योंकि हम्म। कॉल पिकअप होने के बाद में अगर वो आपको इग्नोर कर देते हैं देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कॉल कभी पिकअप ही नहीं हुई तो उनको पता ही नहीं है ना कि आपने कॉल किया। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो इट इज जस्ट दैट दे आर एक्चुअली बिजी, इस वजह से कॉल पिकअप नहीं हो पाया। एंड व्हाट वी हैव आल्सो सीन इज कई बार ऐसा हो रहा है कि यू कॉल द लीड्स, दे पिक अप द कॉल, यू टेल देम कि मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप फॉर मोर डिटेल्स एंड दे से यस, बट वो तब भी मिस कर जाते हैं। क्यों? हम्म। लेट्स से दे वर ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो एंड आपने बोला मुझे मैसेज कर दो, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनके पास में इतना टाइम नहीं था कि वो नंबर कॉपी करके सेव करके पेस्ट करके मैसेज कर पाते, टाइम नहीं मिला उन्हें, दे मिस्ड इट, दे थॉट कि आधे घंटे बाद घर पहुंच के कर दूंगा। फिर लाइफ हैपेंस एंड दे फॉरगेट अबाउट इट। बट जब आप उनको दोबारा कॉल करके बोलते हो ना कि अर्चना मैंने आपको मॉर्निंग में कॉल किया था एंड यू वांटेड टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट इट, बट अभी तक मुझे आपका मैसेज नहीं आया,
I just wanted to remind you कि just drop me a text so that I can share the details with you. Because जब तक आप मुझे मैसेज नहीं करोगे some number सेव करके, तब तक मैं डिटेल शेयर नहीं कर पाऊंगी. It's fine. वो आपको मैसेज कर देते हैं. We have seen it like that. तो Okay. be very much ready for this thing. इसमें थोड़ा हार्डवर्क लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, बट यू कैन एक्सपेक्ट 70, 80, 90% लीड्स ऑल्सो ऑन योर व्हाट्सएप विद मल्टीपल कॉल्स एंड फॉलोअप्स. हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि जो गूगल शीट है वो थोड़ी रिफाइंड क्राउड लेके आएगा, बिकॉज कोई एफर्ट नहीं मारेगा. जैसे अभी मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे समझ में आया, कोई भी रैंडम लोग मैसेज कर दे रहे हैं. दे दे हैव जीरो पोस्ट और जीरो फॉलोअर्स काइंड ऑफ थिंग. आई कैन अंडरस्टैंड दे माइट बी स्पैम और समथिंग. सो चलो ठीक है, हम उसे एंटरटेन नहीं कर रहे, बट द पॉइंट इज जो गूगल शीट है जिसमें कोई एफर्ट मार के अपना डिटेल दे रहा है, तो आई थिंक वो कोई टाइम पास नहीं कर रहा होगा, माइट बी. ट्रू. ट्रू, हाँ, दैट इज वन थिंग. तो हाँ, थोड़ा इस वजह से बेटर फिल्टर्ड. लीड्स आ रही हैं. हाँ, थोड़ा फिल्टर्ड आएंगे वो. आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक दैट. एब्सोल्युटली, ट्राई इट आउट. वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, इसीलिए आपको वो चीज शेयर करी गई है. तो हम्म. यू विल ऑल्सो गेट रिजल्ट्स, एंड इसके साथ में आपके काफी सारे मैनुअल एफर्ट्स भी बच जाते हैं. जो पहले एलएमएस पे आपको मैनुअली डेटा डालना पड़ता था, ऑल दोस थिंग्स, नाउ दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटेड. तो करेक्ट. it's less of efforts and more of results. या, ठीक है दिव्यांश, All थैंक right. यू. Okay, thank you. All right. और क्वेश्चंस किसी के? नो, आई गेस इफ एवरीथिंग इज सॉर्टेड तो हम आज का लाइव एंड करेंगे, एंड अगले हफ्ते आपसे जरूर मिलेंगे. आप सजेशंस देना चाहें व्हाट टॉपिक्स कैल वी कवर, किन टॉपिक्स के ऊपर और डिस्कशन होना चाहिए इन दीज लाइव स्ट्रीम्स, किस तरीके के टॉपिक्स. You are free to give suggestions. If in case you haven't joined the Telegram channel, वो जरूर join कर लेना to get updates about these trainings and ensure that you join these trainings. So yeah, perfect. Thank you so much. All the best and see you guys next week.